Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, Professor A. Giretkar, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn Unit 5, Advanced Surveying Equipment, and topic is 5.2. In last lecture, we have studied principle of EDM, means principle of electronic distance meter, components of electronic distance meter with their function, and uses of idiom. Now in this topic, means after completion of this video lecture, student will be able to CO prepare plans using total station instrument, and LO is explain the procedure to measure the horizontal angle using given theodolite. Given theodolite means 1 second macro optic theodolite or electronic digital theodolite. Okay, in this way. And PO map are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10. Now introduction of 1 second macro optic theodolite. Dear student, name as indicate 1 second micro optic theodolite means the theodolite having a least count of 1 second, means we have measured the minimum angle is 1 second by this instrument, and it also called as micro optic, means here the system is used as the optic lens, hence it is called micro optic theodolite. The 1 second macro optic theodolite having optical system built during मैन्युफैक्चर, मतलब जब ये इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है तब 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक theodolite में ऑलरेडी ऑप्टिकल सिस्टम इसमें प्रोवाइड होता है. So this optical system facilities regarding of both horizontal and vertical angles respectively. मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक theodolite, इससे अपन हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. कम से कम 1 सेकंड तक अपन इससे हॉरिजेंटल या वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं. Micro optic theodolite is a recent development in surveying instrument which gives the 1 second accuracy in measuring the angle. Now this instrument is most suitable and durable for harsh environment and extreme weather condition. Okay, so it has automatic compensation of vertical circle index. Now it has 30 pixel bright and sharp telescope. It gives the short focus distance of 0.7 meter. It provides clear and bright display with backlight illumination and also provide the display for both the sides. 1 second micro optic theodolite is also called as optical theodolite. इसको optical theodolite भी कहा जाता है. In this type of theodolite, optical micrometers are used for measurement of angles. आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पे टेलीस्कोप दिखाई देता है, इसके साथ में एक और छोटा सा टेलीस्कोप उसके पास में दिखाई देता है. इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर्स. माइक्रोमीटर्स, ओके, माइक्रोमीटर्स. यहां से अपन रीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं. The various range of micro optic theodolite are
wild T1, T2, T3 up to T16. Okay, then observe the image also gives the 1 second macro optic theodolite with label, and this is the window having vertical angle. ये vertical angle शो कर रहा है, इस टाइप से विंडो दिखती है. अभी ये जो एंगल है ये 94 डिग्री कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, है ना. So construction details of 1 second macro optic theodolite is magnified in given figure. यहाँ पे दिखाई दिया है. उसके बाद में in some of models the horizontal and vertical circles are so graduated such that reading as low as 1 second can be taken, and by estimation as low as 0.25 second. Okay, now reading the angle by horizontal and vertical circle. horizontal और vertical circle के विंडो से अपन पर्टिकुलर एंगल मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 second माइक्रो ऑप्टिक theodolite. Okay, horizontal and vertical circle are seen through the reading eyepiece on the outside of the upright. It is rotatable from one side to the other and can be set to the most comfortable reading position independent of the angle of the telescope. Okay, now see, observe the images of horizontal main scale micrometer. हॉरिजेंटल एंगल ऐसा दिखाई देगा और वर्टिकल एंगल की विंडो इस टाइप से दिखाई देगा. The horizontal and vertical circle graduations marked as H and V means horizontal अगर एंगल है तो वहां पे H दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओके, और वर्टिकल विंडो V, मतलब एक ही रीडिंग में आपको दोनों भी एंगल साइमल्टेनियसली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, जो रिक्वायर्ड है वो रीडिंग आप मेजर कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, so horizontal angle is represented by H and vertical angle is represented by capital V respectively, and the micrometer scale appears in the apparatus. Micrometer knob is rotated to take the reading and the micrometer reading is then added to the circle reading. Each circle is observed is turned. Means आप देख सकते हैं यहाँ पे 182 is the complete reading. So 182 degree 30 minute, 182 degree 30 minute is the complete reading, and 2 minute and 54 second can be observed from this window, and total angle of horizontal angle is 182 degree 32 minute 54 second. Okay, now for better understanding, to read the horizontal and vertical circle, refer given figure. We get H means horizontal angle read as 182 degree 32 minutes 54 second, and vertical angle read as 36 degree 54 minute and 23 second. Now the magnification of telescope is 25x means 25 pixel, and the aperture is 1.5 minute. Okay, now construction of 1 second micro optic theodolite, as all lens surface are coated so as to improve light transmission and contrast. The telescope has excellent light gathering properties and superb definition. ठीक है, आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये 1 second माइक्रो ऑप्टिक theodolite इज नॉट वर्किंग ऑन एनी डीसी सप्लाई. ओके, कोई भी डीसी सप्लाई के ऊपर ये नहीं चलता, ये सिर्फ सूरज के किरणों के ऊपर रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये 1 second माइक्रो ऑप्टिक theodolite वर्क करता है. ओके, सो नो रिक्वायर्ड एनी डीसी सप्लाई or any battery. Okay, then
It consists of simple optical system which gives the brilliant illumination either by daylight or by a torch attached. Okay. The micrometers for measuring horizontal and vertical angles are provided. The other arrangements of some same as in the transit theodolite. मतलब जो मेन है वो इतना ही है कि जो टेलीस्कोप है उसके साथ में एक माइक्रोमीटर फिक्स किया जाता है और उसमें अपने को इस टाइप से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल की विंडोज दिखाई देता है जिसमें अपने को एंगल मेजर करना पड़ता है और उसके लिए ये सब दिखने के लिए अपने को ऑप्टिकल जो अटैचमेंट है उसको प्रॉपर रिफ्लेक्शन में रखना पड़ता है और बाकी जितने भी अरेंजमेंट है वो सेम एज द ट्रांजिट theodolite के जैसे पार्ट है वैसे इसके भी पार्ट्स हैं. ओके. नाउ the arrangement of accessories in the micro optic theodolite are very compact and well protected. Okay. Now the arrangement of accessories in the micro optic theodolite are very compact and well protected from atmospheric action. In some of the model of micro optic theodolite, the horizontal and vertical circle which are made of glass are फाइनली ग्रेजुएटेड. ओके. जो हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल है जैसे ट्रांजिट theodolite में ये मेटल प्लेट रहती है लेकिन 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक theodolite में ये जो है ग्लास से बने रहते हैं. द मिनिमम रीडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल इज 4 minute and that of the vertical circle is 8 minute, but in some model. Okay. The angle is measured by means of optical micrometer which is accurate to 0.2 second. And in some models, the horizontal circle is graduated to minimum reading of 2 minute and with the help of optical micrometer, angle is measured which is accurate up to 0.1 second. Now, component parts of micro optic theodolite. Observe this image. It gives the T16 model and T1684 model also, and this label gives the component parts of the micro optic theodolite. Some of that are telescope, clamp screws, leveling head, circular level tube, optical plumette, display window, automatic vertical and horizontal reading circle, foot screws, tri-bench and tri-weight, and tripod top are the component parts of micro optic theodolite. Now, then construction of electronic digital theodolite. Dear student, see the image of electronic digital theodolite. Digital theodolites are the precise, means accurate type of theodolite which has least count of 1 second. The horizontal and vertical angles are shown directly on display panel of the transit of the instrument. जैसे कि 1 सेकंड माइक्रो ऑप्टिक theodolite में अपने को विंडो दिखती थी और विंडो के ऊपर से अपने को रीड करना पड़ता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल theodolite में डायरेक्ट जो एंगल है वो इस डिस्प्ले में डिस्प्ले होता है और जस्ट अपने को वो रीड करके लिखना है. ओके. The operation of display चार्जेबल बैटरी इज प्रोवाइडेड. मतलब ये डिस्प्ले दिखने के लिए अपने को यहाँ पे बैटरी फिक्स करना पड़ता है टू द इंस्ट्रूमेंट फॉर गिविंग द पावर सप्लाई. मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल theodolite को क्या जरूरी है? डीसी पावर सप्लाई देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा या कोई भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं होगा. ओके. The separate keyboard is provided to facilitate the different operation of theodolite. यहाँ पे
इसके कुछ फंक्शन कीज दिए हैं, इसके ऊपर से अपन सभी एंगल वगैरह अपन मेजर कर सकते हैं। ओके, देन an electronic digital theodolite resemble a conventional optical theodolite in size and shape, but it works with electronic speed and efficiency. Now it measures angles electronically. There are various makes of electronic theodolite. कौन से मेक हैं? The horizontal and vertical angles are shown directly on the display panel of the instrument. For operation of display, chargeable battery is provided to the instrument for giving the power supply. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया. The separate theodolite is provided to facilitate the different operation of the theodolite. An electronic digital theodolite resemble a conventional optical theodolite in size and shape, but it works with electronic speed and efficiency. Now, component parts of electronic digital theodolite are as shown in given figure. That is the targeting site. यहाँ पे object lens, handle screw, center mark and vertical plate, horizontal fine motion screw, horizontal clamp, tubular vial. Okay, operating keys, circular wire, tripod base plate, also focusing ring, battery case, eyepiece, telescope fine motion, telescope clamp, tri-branch locking lever, leveling screw, communication port, optical plumette are the parts of the electronic digital theodolite, and some of these are telescope, clamp screw, leveling head, circular level, level tube, optical plumette, display window, automatic vertical and horizontal reading circle, foot screws, tri-bench and trivet, and tripod top are the electronic component parts of electronic digital theodolite. Now, application or use of electronic digital theodolite और field application भी बोल सकते हैं अपन इसको. Field application or uses of electronic digital theodolite are means it is used for long road or railway bridges, alignment of piers and their center to center distance between piers can accurately be done with the help of modern digital theodolite. In the progressive surveying fieldwork, the horizontal angles and vertical angles are precisely found out up to fraction of 1 second accurately even during the night time. नाइट टाइम में भी अपन 1 सेकंड तक हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पर पहले इसमें फॉर लॉन्ग रोड और रेलवे, लंबा रोड अगर अपने को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके अलाइनमेंट के लिए, या रेलवे ब्रिज का अलाइनमेंट के लिए, पियर के अलाइनमेंट के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए precisely electronic digital theodolite are used. Then triangulation work can be completed in surveying with highest precision either for primary or secondary or tertiary triangulation. In this case, horizontal angle of triangles are measured accurately by modern digital theodolite with usual standard procedure of using theodolite. And last one is the precision because of digital display. Precision because of digital display मतलब डिजिटल डिस्प्ले होने से ज्यादा एक्यूरेसी अपने को मिलती है. एस ऑफ द ऑपरेशन, डे नाइट ऑब्जर्वेशन आर पॉसिबल क्योंकि इसमें डिजिटल बैटरी वगैरह सब
लगी रहती है, इसलिए अपन इसको नाइट मोड में भी मेजर कर सकते हैं रीडिंग। एंड एलिमिनेशन सब मैनुअल्स एरर, मतलब इसमें कोई गलती होने की, जो अपने से गलती होती है वो इसमें गलती होने के चांसेस कम रहेंगे as the electronic digital theodolite. Now summary of this lecture: we have already studied introduction of 1 second micro optic theodolite, construction of 1 second micro optic theodolite, component parts of micro optic theodolite, construction of electronic digital theodolite, component parts of electronic digital theodolite, and application uses of electronic digital theodolite. Okay, thank you very much.